Assalamu alaikum students, hope you all are fine. I want to say one thing. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it so that you will be able to get the updates about the studies which I make you people study here. Okay, the poem number 4, Oh Where Are You Going? The main idea of this poem is बेसिकली द रीडर ट्राइज टू स्टॉप अ राइडर. एक रीडर है जो कि आप कह लें कि राइडर को रोक रहा है सफ़र करने से. रीडर यानी कारी. कारी घुड़सवार को रोक रहा है सफ़र करने से, एक ऐसी जर्नी पे जाने से जो कि उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा ख़तरों से भरी हुई है. वो उसको डराता है, उसे कहता है कि तुम्हारे रास्ते में बहुत मसाइब और मुश्किलात हैं, और जो आगे वहाँ रास्ते में एक वैली आएगी वो बहुत ज़्यादा महलक है, गलाज़त के ढेर हैं और रास्ते में अंधेरा छा जाएगा. तुम्हें चीज़ों की, खाने पीने की, हर चीज़ की कमी होगी. तुम्हें हर किस्म के पत्थरों से और जो है बुरे बुरी इलाकों से गुज़रना पड़ेगा. और वो उसको फिर एक भूत के मुतलिक भी बताता है कि जो रास्ते में मौजूद है वहाँ पर. और इसके अलावा वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा. और वो मसाइल और बीमारियाँ जो हैं वो बताता है कि तुम्हें लग जाएंगी वो बीमारियाँ. तो वो आगे से जवाब देता है कि जो बीमारियाँ या जो मुसीबतें या जो कुछ भी है वो उनके लिए, तुम्हारे जैसों के लिए जो कि डरते हैं, और मैं रास्ते की मुश्किलात से डर के रास्ते में नहीं बैठ सकता. और वो उसको वहीं छोड़ के चला जाता है. और वो कहता है कि जो इंसान हालात से लड़ नहीं सकता वो कभी भी जीत नहीं सकता. इसलिए वो उसको ये समझता है कि समझाता है कि जो ब्रेव आदमी है वो मुकाबला कर लेते हैं और बुज़दिल पीछे रहते हैं, बैठे रह जाते हैं. द रीडर बेसिकली ट्राइज टू स्टॉप अ राइडर फ्रॉम गोइंग ऑन अ dangerous journey. He tries to frighten him by telling him that the way is full of trials and tribulations or troubles. He says that there is a fatal valley and a dunghill and darkness and a large gap on his way. There is lack of things. He would have to walk on the rough grass and on stones. Then he reminds him of a ghost in the thick trees. He tells the rider that he has to face many difficulties and he has to face various diseases if he walk on that path, and if he wants to go away on that journey. But the rider says that the troubles are for those who are afraid of them, and the brave man faces the troubles and leave the coward behind. So this is the main idea of this poem. Reference, these lines have been taken from the poem of Where Are You Going by W.H. Auden. You have to tell about the name of the poem and the name of the poet in reference. Then in the context, as I have told you before, the main idea you have to write in the context that the reader is basically stopping a rider from going on a dangerous journey, and he makes him frightened, and or tries to make him frightened by telling him that the way is full of trials and tribulations, and there is a dunghill, there is a fatal valley and darkness on his way. There will be a shortage of things for him on his path towards his journey, on his journey towards his destination, and he have to walk on the rough grass and the poor lands, and he would have to be aware. He make him be aware of the ghost on his way. And he also says that he has to face the difficulties of having a disease. And but the writer tells him that the troubles are for those who are afraid of them. The brave man faces them and leave the coward behind. Okay, this is the main idea. Now coming to the first stanza. The lines of the first stanza are: Oh, where are you going? Said reader to the rider. That valley is fatal when the furnaces burn. Yonder's the maiden whose orders will madden. That gap is the grave where the tall return. बेसिकली वो रीडर जो कारी है, वो राइडर यानी घुड़सवार को कह रहा है कि जो कि एक जर्नी पे जाना चाहता है, उसे कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है कि वो वादी कितनी हलाकत खेज बन चुकी है, वहाँ
जो है वो सूरज की तपिश से वो कहता है कि वहाँ जो भट्टी है वैसे जल उठती है। और इसके अलावा तुम उधर जा रहे हो, वहाँ गलाजत के ढेर हैं जिनकी बदबू से तुम पागल हो जाओगे। तुम वहाँ जा रहे हो जहाँ एक बहुत बड़ी खाई है जो कई आदमियों की कब्र बन चुकी है, जिसे देखकर जो है एक तवील कद का आदमी भी फलांग नहीं सकता और खौफ खा कर लौट जाता है। So here you first of all you have to write the reference, the name of the poet and the name of the poem, and then you have to write the context, and then you have to explain these lines. So I have told you before the reference and the context, so I will come to the explanation of these lines. There is a horseman who is going on his destination. The way to his goal is full of difficulties, and the reader basically tries to stop him from going on such a journey. And he tries to stop him and frighten him by saying that there is a fatal valley on his way, which is full of trials and tribulations, and it proves to be very fatal. And there is a dunghill on his path, and its smell is so bad that he maddens the man. And there is a gap which the tall and strong man dare not cross and return. So ये सारे प्रॉब्लम्स वो उसे बताता है कि तुम्हें ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि तुम रास्ते में वहाँ उस रास्ते पे ना जाओ। तुम्हें जो है गलाजत के ढेर मिलेंगे जिनकी बदबू से तुम पागल हो जाओगे। एक वादी है जो कि ये सूरज की तपिश से जिसकी जो भट्टी की तरह जलती है, और इसके अलावा एक खाई है जो कि कब्र की मानंद महसूस होती है, और वहाँ से बड़े बड़े कदावर आदमी भी जो है वो फलांग नहीं सकते और वापस आ जाते हैं। ओके, द स्टैंजा नंबर 2. Oh, do you imagine, said the Führer to the Führer, that dusk will delay on your path to the pass? You're diligent looking. Discover the lacking. Your footsteps feel from granite to grass. अब वो उसे कह रहा है कि ओ तसव्वुर, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो किस चीज़ का? मुसाफिर को कौन कह रहा है? खौफज़दा करने वाला, जो ख़ुद भी खौफज़दा है या खौफज़दा करने वाला है, वो मुसाफिर को कह रहे हैं कि क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि रास्ते में जो है वो धुंधला का या अंधेरा आ जाएगा तुम्हारे रास्ते में, और तुम जो है अपना जो है डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकोगे। इसके अलावा तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि तुम्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों का फुकदान या कमी महसूस बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, जैसे कि फ़ूड की शॉर्टेज, और जो चीज़ तुम्हें चाहिए हो सकता है वो तुम्हें रास्ते में ना मिले। इसके अलावा तुम्हें इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि तुम्हारे कदम जो है पत्थरों और घास पर चलने के सिवा कुछ भी महसूस नहीं करेंगे, यानी कि तुम्हें सख्तियाँ, रास्ते की सख्तियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू राइट द reference which I have told you before, the poet's name and the poem's name and the poet's name, and then you have to write the main idea or context of the poem, and then you will come to the explanation. So here the explanation is: the reader who is fearful tries to frighten the traveler. He says that he must know that there would be darkness on his way, and it would linger on during his path to the pass. During his journey to the pass, and it would delay his advance to the pass. There would be lack of food, water, comfort and other such things on the way. हम उसको बता रहे हैं कि तुम्हें खौफज़दा जो है ख़ुद से, वो मुसाफिर को बता रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ को जानना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते में जो अंधेरा पड़ जाएगा, जो कि तुम्हारी सफ़र को और लंबा कर देगा, ठीक है, और तुम जो है अपनी जहाँ तुमने पहुँचना नहीं पहुँच पाओगे। और इसके अलावा पानी का और खाने पीने का फुकदान पर बर्दाश्त करना पड़ सकता है तुम्हें। इसके अलावा ये कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए इन चीज़ों को तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी इन चीज़ों को तलाश करने के लिए, और तुम्हारी हो सकता है कि सारी एफ़र्ट्स जो हैं वो फ्रूटलेस जाएं। तो और इन सब चीज़ों की कमी की वजह से तुम्हें बहुत सारे मसाइल बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इस चीज़ को समझो कि वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते पे तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मोर ओवर द वे टू हिज डेस्टिनेशन इज़ नॉट रोजी, रादर इट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. ही वुड हैव टू वॉक ऑन रफ ग्रास और ऑन स्टोन्स. द रीडर ट्राइज टू टेरिफाई हिम दैट देयर वुड बी नो ईजी वे टू वॉक ऑन. उसे डरा रहा है कि तुम्हारे रास्ते में बहुत ज़्यादा मसाइब हैं आएंगे, तुम्हें जो है वो रास्ते में पत्थरों से होकर और बहुत मुश्किल रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि तुम ऐसे
रास्ते पे ना जाओ।